हमारे रहीम, आज हम एक अहम रिसर्च के बहुत अहम टॉपिक पे जा रहे हैं और शायद हम आज के इस टॉपिक को दो हिस्सों में तकसीम करें बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक of the end of the discussion of the 3 days continuous discussion of our research. And I think we should divide this topic in phase 1 and in phase 2. Today's topic is how to write, how and why to write a research article, and where should we submit this research article. That is why these are 3 different components of the article. And I hope after this presentation, most of my students will be able to understand why the article is important and how should we write this article, and after writing, where should we submit this article. Research article is a key component for the teachers, for the medical students, for the researchers, and for those people who want to remain in teaching life. So today, in the beginning, I will try my best to make this topic very easy. These are our continuous presentation, hand-on workshops about the research and what was the importance of this research and why we want to write the paper. As I think most of the people do not know the actual component and actual objective of writing the article. So first thing first, who am I talking to? My today's talk is mostly for my students and for my friends, for my consultants working in different area of the Pakistan. How many graduate students, research scholars, postdoc, assistant professor, and associate professors, how many of you have published a research? The first thing is that before asking how many people have done the research, how many people know the research, how many people know what are the basic research and the clinical research? And if you have done the research, and if you have prepared your manuscript, if you have prepared your report, how many people have submitted? And how many of you have had a paper rejected? And what was your impression? What was your feeling when your paper was rejected? I think you are writing your wish that people must read. If your writing, if your paper is not interested, who will read? जंगल में मोर नाचा और फिर किसने देखा? If you will publish a paper
in such a journal or in such a way that nobody knows what have you written, and if it is not interested, and even if you have published a paper, nobody will. The picture in this field is how a person is reading a newspaper with the concentration, using the spectacles. You know, Allah ne sabse pehle first time jo created the kalam. The first ayat of Holy Quran is Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. So ilm, honor, adab, and the writings. These are the things that will make you. No doubt the humans are mortal, but creations with the grace of Allah, writings with the grace of Allah will remain in your life or in this world after your life. Today's learning objective is writing for the biomedical journals. And you must know what are the biomedical journals, what is the good journal in Pakistan, how to submit the journal in the international, or type of the article, what are different types of the articles, what are the description of the articles. Journals of a good repute in the world, in the Pakistan, in the medical sciences. Importance of the impact factor. What is the importance for impact factors? How you will evaluate a good journal, how you evaluate that your article is making some place among the brains of the other peoples. This depends, these are all the questions. How to start reading and writing a journal as a beginner. Before that, yesterday I discussed how to write a synopsis and to submit. In the synopsis writing, I discussed one thing, that was the study design. There are different type of study designs, and the importance of this one. Study is epidemiological studies, preclinical study, clinical studies. The study is divided into two components mainly. Put in your brain that is this study interventional? Is there any intervention in the study? No. If no, then it is the observational study. If yes, it is called interventional or experimental study. Okay, or it is called randomization and control study, randomized control and control study. Observational study are divided two types: descriptive, simple descriptive, where I yesterday told that no need to write the hypothesis. Or it is analytical study. When it is analytical study, you have to make one or two descriptions. In the descriptive study, this is the case report. If you think that there is very interesting case of the corona or any other area where you think even a new presentation of the typhoid patient, or even a new presentation that you feel this is the very interesting case, that you have to report in the case report. Case report is the beginning of the study. The case report is very important to this, no doubt. It has no credit in your life in Public Service Commission, in FCPS residency, or in postgraduate residency, or in the promotion of your study. But it is the beginning, first step, first base pair of your life and of the research. There may be one or there may be so many other cases. There may be survey. So this is the descriptive, observational, non-interventional study. If it is non-interventional observation study and it is analytical, cross-sectional study, case control study, and cohort studies. So these are the different studies. Experimental study, randomized, yes, no, and if
Yes, randomization and control study. There is also similar study, that is the Cauchy experimental study. This lecture was written 4 years ago when I was in Department of Pathology, University of Lahore. But nowadays, in working as a principal in Azad Jammu Kashmir Medical College. So I have not updated this, but most of the things are almost similar. Yesterday, I told that there is no way to get the experience except through the experience. इंसान तजर्बात से बनता है, एक तजर्बे के बाद दूसरा तजर्बा होता है. तो that is why इंसान कुंदन बनता है तजर्बों के साथ. तो you should make the experience and learn from the experience. Now, the first question in my, why write or publish the research? क्या जरूरत है, क्यों हम लिखें, क्यों इतनी मेहनत प्रोफेसर मुलाजिम हसन बुखारी अरसा दराज से कर रहा है? तो that is why the first, ideally, जो सबसे important बात है, ideally that is to share research findings and discoveries with the hope of the improving of the healthcare systems. We doctors, we medical students, we people belonging to these fields, our ideal first objection should be हमारे तजर्बात जो हैं उससे लोग सीखें, हमारे तजर्बात को लोग पढ़ें, हमारे तजर्बात तो उसका एक ही तरीका है, you write paper. Some of my friends has requested me that please try to discuss both language, Urdu and English. That will make your presentation very beautiful. I love to act upon the suggestion of my friends. Practically, to get funding is very important. When you are going to appear in the field of principals, professors, vice chancellors, there is a column of the number that how many funding you have obtained for the research. That is very important. The funding you cannot get until and unless you have a good written article in a good reputed journal. जब तक किसी अच्छे जर्नल के अंदर आपने पेपर पब्लिश नहीं किया, उस वक्त तक आपको फंडिंग नहीं मिलती. तो अगर फंडिंग नहीं मिलती तो जब आप वाइस चांसलर या आप प्रिंसिपल के इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे तो आपके वो नंबर का कॉलम खाली चला जाएगा. Another thing is to write article to get the promotion, assistant professor, associate professor, प्रोफेसर. आजकल तो पीएमसी की रिक्वायरमेंट इंतहाई मुश्किल होती जा रही है, और हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रमोशन का केस आता है तो फील्ड फोन आ रहे होते हैं कि बुखारी साहब कोई आपका जर्नल आर्टिकल है, कैन यू हेल्प. तो दिस इज ऑल इनजस्टिस. टू गेट द जॉब व्हेन यू आर अप्लाइंग इन प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, professor, dean, assistant professor, associate professor, not only it is your degree that you have taken, it is your publication, it is your research that matters. So another important thing is that to keep your job, it at the publication. तो हर साल आपकी वैल्यूएशन होती है मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कि आप कितना HEC के अंडर अगर आप काम करते हैं टेनोर ट्रैक के ऊपर, तो आप पे पूछा जाता है कि आपने कितने पब्लिक लिए. तो गुड टू मेक ए गुड CV, अट्रैक्टिव CV ऑफ द ऑथर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज आपको बताऊं कि कितनी तरह की राइटिंग्स होती हैं. ये एक सारी लिस्ट है राइटिंग्स की. किताब लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, सिनॉप्सिस लिखते हैं, मोनोग्राम लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, केस रिपोर्ट लिखते हैं, ओरिजिनल आर्टिकल लिखते हैं, रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं, हिस्टोरिकल रिव्यू लिखते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं,
लीडिंग आर्टिकल लिखते हैं, बिब्लियोग्राफिकल नोट्स लिखते हैं, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट लिखते हैं, रिव्यू ऑफ द बुक लिखते हैं। तो इन सब के अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट थिंग है ना, वो है आपका ओरिजिनल आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल, जो आपको नंबर देता है, जो आपको प्रमोशन में और आपके जॉब के अंदर। बाकी सारी चीज़ें हैं कि अगर आप लिखना सीखते हैं, जाहिर है आप साइंटिस्ट हैं और ऑथर्स हैं तो राइटर्स हैं, तो आप ये सारी चीज़ें लिखते रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कैसे एक आर्टिकल को लिखते हैं और उसको किस तरीके से अच्छे जर्नल में सबमिट करते हैं। पहले तो हमें लिखना सीखना चाहिए। अल्लाह ने कलम बनाई सबसे पहले, इंसान के लिए कलम बनाई, उसकी खुराक के लिए मछली बनाई, उसके लिए इल्म उतारा। इकरा बेश में रब्बे कल्लज़ी खलक, इंसान ने बनाया किस तरीके से। खुदा ताला की खुदाई के अंदर हम सोचें तो ये सारी चीज़ों को तहकीक करनी पड़ेगी। हमेशा मैं कहता हूँ कि मेक द रिसर्च इन एवरीथिंग, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दिस नेचर, यू बिकम ए वेरी गुड ह्यूमन। मैं तो अक्सर कहता हूँ जो एक अच्छा राइटर होता है एक अच्छा इंसान भी होता है। तो लेट्स थिंक, लेट्स प्रोसीड। ए डॉक्टर, ए कंसल्टेंट, ए फिजिशियन, a scientist, these are two different things. Consultants, most of the time, doctors, consultant, physician, अपने पेशेंट के देखभाल और उनके इलाज में मसरूफ रहते हैं। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, रिसर्च उन डॉक्टर्स के लिए, बट द पेपर इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ। साइंटिस्ट आर रेटेड बाय द व्हाट दे फिनिश, नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट। ये नहीं है कि दावे करते रहे कि जनाब मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये रिसर्च की है। बट ये देखें कि आपने पेपर लिखा है, कोई आपने कोई वैक्सीन बनाई है, आपने कोई नया काम किया है, आपने क्लिनिकल कोई इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है, आपने कोई ऐसी चीज इजाद की है जिससे आपके आने वाली नस्ल, आने वाले लोग आपको याद रखेंगे। जितने बड़े बड़े साइंसदान, डॉक्टर, जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स गुजर गए, आज उनका नाम नहीं है, लेकिन जो साइंसदान था, साइंसदान है, उनके नाम रहते हैं। जो किताबों में जो लिख गए, वो आज भी उनके नाम जिंदा हैं। जो किताबें लिखी गई, उनका नाम भी, किताबें लिखी जाती हैं कि आपकी आने वाली नस्ल पढ़े लिखे। सो हाउ डिफिकल्ट इज दिस, कितना मुश्किल है लिखना। एक कोलू के बेल की तरह इंसान अपने आप को उसके अंदर, सो वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट लर्निंग, थिंकिंग, writing. So this is the picture that's going to show you how it is difficult of this one. Getting a publish a paper, competition for space in the journal. अब बात यह है कि जहाँ पब्लिश करते हैं ना, अक्सर रिजेक्ट होता है। देखें पेपर किस फील्ड में भेज रहे हैं, तो उनके अंदर कंपटीशन होता है, उसके अंदर स्पेस कितनी है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ द पब्लिकेशन बड़ा महंगा होता है। बड़े बड़े जर्नल पैसे मांगते हैं। फॉर ए मेडिकल स्टूडेंट, फॉर ए सिंपल एक डॉक्टर होता है, आम डॉक्टर के लिए $350, $360 पर पेज बहुत मुश्किल है। बट इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द देयर आर सो मेनी जर्नल्स, दे आर फ्री। लेकिन जब आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च के लिए अगर आप फंडिंग अपने कॉलेज से लेते हैं, इंस्टीट्यूट से लेते हैं, तो आपके पास पेपर लिखने के लिए भी फंडिंग होती है। दैट इज, आप देखें जितने भी बड़े इदारे हैं, साइंस, नेचर है, मेरे तो नेचर के अंदर मैंने और इसको देखा है कि तकरीबन 99 पॉइंट जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। AJP 50% रिजेक्शन, JBC 65%, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज, नेचर, सेल, इनके अंदर रिजेक्शन ज्यादा होती है। उसकी कई वजूहत हैं, हम देखेंगे कि क्या उसकी क्या क्या वजूहत है। मेजर रीजन फॉर द रिजेक्शन, आपका आर्टिकल इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, आपकी तहरीर जो है दैट इज नॉट नॉवल। मैंने द रिव्यूअर रीड, रिव्यूअर कैनॉट, वो आपकी तहरीर उसको कैनॉट इम्प्रेस। तो कन्फर्मेटरी, इट इज नॉट नॉवल।
Poor study design. Yesterday I told that study design is very important. Material methods are very important. If a good material method you will write, you can get a good paper. The poor control on the making the material method on this study. कल मैंने कहा था कि आपको स्टडी घोड़ा है और घोड़े की लगाम आपके हाथ में अगर नहीं है तो घोड़ा भाग जाएगा, और कितनी रफ्तार रखनी है वो आपको एक गाड़ी आप चला रहे हैं तो उस मोटरवे पे कितनी रफ्तार रखनी है, ज्यादा जाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा और कम चलेंगे तो आप पहुंच नहीं सकेंगे. दिस हैप हैजर्ड hypothesis good adequate testing. इन एप्रोप्रिएट जर्नल. मैं पैथोलॉजी के आर्टिकल लिखता हूं और मैं उसको सबमिट कर देता हूं जनाब नेचर साइंस के अंदर, तो रिजेक्ट हो जाएगा. तो सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट जर्नल इज पुअरली रिटन. बड़ी पुअर लिखा होता है. इंग्लिश हमारी पाकिस्तानियों की बड़ी पुअर होती है और हम ये नहीं चाहते कि हम अपना आर्टिकल लिख के किसी को पढ़वा लें. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वन. व्हेन आई रोट द फर्स्ट आर्टिकल in 1996, I asked at that time Dr. Samina Naeem to read it. Dr. Samina Naeem and Dr. Shahida Niyazi वर्ग, उनकी इंग्लिश मुझसे बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत अच्छी थी, तो मैं हमेशा उनको कहा करता था कि रीड दिस वन. और फिर ऐसा ऐसा होता ऐसा कि लोग लिखते और मुझे भी कहते कि डॉक्टर साहब ये भी पढ़ लें. पोअरली रिटन आर्टिकल जो है, आजकल मैं अपनी बेटी को कहता हूँ कि पढ़ ले, क्योंकि मैं अपनी गलतियां खुद नहीं निकाल सकता. यू कैन नॉट सी योर ओन मिस्टेक्स. टिप्स क्या हैं आज की? नो द जर्नल, इट्स एडिटर एंड व्हाई यू पब्लिश द पेपर. पढ़ें उस जर्नल को. पे क्लोज अटेंशन ऑन द स्पेलिंग, ग्रामर्स एंड पंक्चुएशंस. Make sure references are comprehensive and accurate. Avoid careless mistakes. So many careless, no repetitions. Read and conform to instruction of the authors. Every journal gives the instruction of the author before submitting. You read the instruction of the author carefully. If you will submit it, this person is going to submit it. This is the editor, just a depiction. Paper can be published or paper can be published. This depends you. So there are 7 sins you should not do in writing. वो 7 गुनाह क्या हैं? आपने वैसे लाइफ में हमेशा कहा करता हूँ कि गुनाह से बचा करें. सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है. शिर्क से बचा करें. अल्लाह की तौहीद का गुनाह जो है वो, जिस तरह और भी गुनाह है, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह है तौहीद का इनकार करना. एक बहुत बड़ा गुनाह है. कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है. जना एक बहुत बड़ा गुनाह है. झूठ एक बहुत बड़ा गुनाह है. मिलावट एक बहुत बड़ा गुनाह है. मुनाफाखोरी एक बहुत बड़ा गुनाह है. इसी तरह 7 गुनाह ये भी मैं गिनवाता हूं. पहला, डाटा मैनिपुलेशन, फैल्सिफिकेशन. आप देखें कि घर में बैठा 40 आर्टिकल पढ़े, डाटा उठाया, मैनिपुलेट किया और आर्टिकल लिख दिया. डुप्लीकेशन, मैनुस्क्रिप्ट, आधा उधर 2 आर्टिकल हो गए. नो, नेवर डू इट. एक आर्टिकल 2 जगह पे छप जाए, इंतहाई जुर्म है. अब तो आप जैसे तो प्लेजरिज्म, आपके खिलाफ केस हो सकता है. रिडेंडेंट पब्लिकेशंस, अवॉइड प्लेजरिज्म. चेक द प्लेजरिज्म है कॉपी चोरी करना किसी चीज की, किसी की तहरीर को, किसी के डाटा को चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह, जुल्म है. तो केस हो सकता है आपकी सारी जिंदगी की. all your research are you can that is the punishment you can waste it. Author conflict of interest. किसी कोई पैसे देके आपको लिखवाता है, कोई कंपनी आपको कहती है जनाब हम आपको अमेरिका भेजेंगे, और आपको आजकल तो खैर मेरे आज एक उस्ताद ने मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब क्या आप देखें कि एक
कंपनियां जो हैं लाखों के हिसाब से हमारे बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को रिश्वत देती हैं और उनसे दवाइयाँ तजवीज़ कराते हैं, तो क्या ये गुनाह नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल गुनाह है, लेकिन आप ये देखें कि ये गुनाह पूरी दुनिया में किया जा रहा है। ऐसा गुनाह है कि जो पूरी दुनिया में, अब पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया है, बहरहाल पाकिस्तान में कम है लेकिन है बहुत ज़्यादा। इसी तरह राइटिंग में भी किसी ड्रग के बारे में लिख देना ये बहुत अच्छी है, किसी के बारे में कह देना बुरी है, तो दैट इज द ऑथर्स कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये नहीं करना। इवन एक एथिक्स है, ह्यूमन के भी उस रिसर्च के लिए एथिक्स हैं, एनिमल्स के लिए उसके एथिक्स हैं, कंसर्न जो है। और सातवां गुना है कि जब ह्यूमन इंसान का लिखें तो उसके डाटा का एथिकल इश्यूज को ख्याल रखेंगे। मेक द रेस्पेक्टफुल, एवरी पेशेंट इज रेस्पेक्टफुल, मेक द जस्टिस, मेक द बेनिफिशियल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं। Balancing act between the publication of high quality article is outstanding journal and getting in the numbers. Grant reviews book at both. How many papers in the journals? आज अगर मैं देखूं तो मेरा ख्याल है कि 200 से ज़्यादा आर्टिकल है मेरे, और उनमें से अगर मैं देखूं तो 10 या 15 आर्टिकल ऐसे हैं जो मुझे आज भी दिल को अच्छे लगते हैं। कुछ तो बहुत इनोवेटिव है, और कुछ आज जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हमारी जो है, मैं अपने देखता हूँ सलाहियतें लिखने की बेहतर होती जा रही हैं। इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, इंसान का माँ की गोद से लेके कब्र के दहाने तक इंसान सीखता है, और इंसान सीखे। हाँ, अब ये देखता हूँ कि वो जो गुनाह थे ना, उसके अंदर जो आपकी एक बुरी पब्लिकेशन है ना, रिटर्नेंट पब्लिकेशन है, रिटर्नेंट पब्लिकेशंस को जो है वो क्या होती हैं, किस तरह होती हैं, क्या चीज़ है उसकी। डाटा इन द कॉन्फ्रेंस, इन डाटा इन कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट, नो, ये नहीं है डाटा उसके साथ। सेम डाटा इन डिफरेंट जर्नल्स, यस, एक ही डाटा आप देख लेते हैं कई जर्नल्स के, अपना वो कर देते हैं डुप्लीकेशन। डाटा इन द वेबसाइट में भी, आप वेबसाइट से उठाया डाटा, उसके बाद डाटा included in reviewers articles, okay, if letters, explanation of published data set, yes। अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो 3 दलीलें देना चाहता हूं आपका, 3 लॉ ऑफ 3। एक कोने पे साइंस अच्छी हो, साइंस आपके पूरे रिसर्च को, रिसर्च डिजाइन से शुरू होगी, स्टडी डिजाइन से शुरू होगी, और वो सारी चीजें कवर करे। गुड साइंस, किसी अच्छी चीज पे रिसर्च की हो, कोई अच्छे टॉपिक पे रिसर्च की हो, एक गुड राइटिंग, और अच्छे जर्नल के अंदर। देखें, ये तीनों चीजें किसी एक इंसान में इकट्ठी नहीं हो सकती। इंसान खूबसूरत भी हो, इंसान अमीर भी हो, इंसान मालदार भी हो, ये तीनों चीजें किसी एक जगह पे बड़ा रेयर इकट्ठी होती हैं। इसी तरह मैं कहता हूं कि हमें इसको शेयर कर देना चाहिए। एक ग्रुप बना के हम साइंस इकट्ठी कर सकते हैं, एक ग्रुप बना के हम राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, और सीनियर की तजावीज़ के साथ हम एक अच्छे जर्नल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा साइंस क्या है? लिखा अच्छा हो, आपका साइंस टॉपिक अच्छा हो, न्यू एंड रिजेंबलिंग समथिंग फॉर्मली नो और यूज, कैन बी अ नोवेल बट नॉट इम्पोर्टेंट। इसके साथ मैकेनिक्स, दूसरा इंपॉर्टेंट जो इशू है जो आपकी साइंस को अच्छा कर सकता है, आपकी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग। हाइपोथेसिस अच्छी हो, उसकी टेस्टिंग अच्छी हो। टेस्टिंग हाइपोथेसिस, डिटरमिनिंग द फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आर पॉसिबल फॉर एन एक्शन, रिएक्शन, अदर नेचुरल फिनोमिना। इसके बाद आपका
डिस्क्रिप्शन जो है बेहतर होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव, हाउ आर थिंग्स। आपके बात करने का तरीका अगर अच्छा है तो आपकी बात कोई सुनता है। इसी तरह अगर आपकी बात करने की गुफ्तगू का तरीका बेहतर नहीं है तो आपकी गुफ्तगू कोई नहीं सुनता। आपके अगर लिखने का तरीका सही नहीं है तो आपको कोई नहीं पढ़ेगा। दैट इज डिस्क्राइब्स हाउ आर थिंग्स आर बट डज नॉट टेस्ट हाउ थिंग्स वर्क। हाइपोथेसिस आर नॉट टेस्टेड, ये ऐसा नहीं है आपका उसके अंदर। जर्नल अच्छा कौन सा होता है? अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल। इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल जो है ना, वो उसकी एवरेज नंबर ऑफ टाइम ऑफ पब्लिश पेपर्स आर साइटेड अप टू 2 years ऑफ पब्लिकेशन। देखें, अगर कोई किसी जर्नल्स का ना औसतन एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स पब्लिश्ड, कोई एक जर्नल जो है वो कितना पब्लिश करता है 2 साल के अंदर, 4000 आर्टिकल 2 साल में पब्लिश करता है। उन 4000 में हाउ मेनी पेपर्स आर साइटेड अप टू 2 years पब्लिकेशन? ये जर्नल्स, ये इम्पैक्ट इससे कैलकुलेट होता है। इमीडिएट इंडेक्स दो डिफरेंट चीजें हैं, इम्पैक्ट फैक्टर और इमीडिएट इंडेक्स। इम्पैक्ट फैक्टर इज मोर एज कंपेयर टू इमीडिएट इंडेक्स। एवरेज नंबर ऑफ टाइम पब्लिश पेपर आर साइटेड ड्यूरिंग ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी जर्नल का। और एक जर्नल का हर साल इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता भी है और कम भी होता है। तो अगर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल वाले आज मैं समझा सकूं, हर इंडेक्स मेडिकल जर्नल इम्पैक्ट वाला जर्नल नहीं होता, और हर इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल इंडेक्स होना जरूरी है। द जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर इज फ्रॉम जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, a product of the Thomson ISI Institute of Scientific Information. JCR provides a quantitative tool for evaluating the journals. ये वो इदारे हैं, ये वो एजेंसियां हैं जो किसी जर्नल्स को इवेलुएट करती हैं। The impact factor is one of these. It is measure of the frequency with which the average article in a journal has been cited in a given period of time, जो मैंने आपको 2 साल बताया है। The impact factor for a journal is calculated based on a 3 years or 2 years period and can be considered to be average number of times published paper are cited up to 2 years after the publish। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। द इम्पैक्ट फैक्टर 2010 of a journal would be calculated as follow: A, number of times article published 2018 से 2019 तक were cited in the index journal during the 2010. B, the number of articles reviews, proceedings or notes published in 2018 and 2019. इम्पैक्ट फैक्टर ए कैलकुलेटेड बाई पी। आप देखें कि आपकी एक वीडियो होती है, आपके कितने प्रिस्क्राइबर होते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन आप देखेंगे किन को आपकी बात दिल को लगती है तो आपके ऊपर कमेंट्स अच्छे देते हैं। तो अगर आपकी उस वीडियो के कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर बेहतर। इम्पैक्ट फैक्टर जो है ना, अब जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं, इनकी पुरानी बात है, नेचर है, साइंस है, ये एजेपी है, ये मुख्तलिफ जर्नल्स हैं। और इसके अंदर जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जर्नल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर, 4 बड़े जर्नल हैं उसमें पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस का जो वो है जर्नल है, ये मेरे ख्याल है मेरे पास पड़ा है, ये जर्नल है। इसका इस वक्त इम्पैक्ट फैक्टर है लिखा हुआ है, ये पुराना है लेकिन ये सबसे बेहतर जर्नल इस वक्त इम्पैक्ट फैक्टर बेहतर है। इस तरह JPM है, इस तरह कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन है, ये वो जर्नल है जिनके हमारे इम्पैक्ट फैक्टर आते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में 4 और 5 और भी हैं जो पबमेड पे आते हैं, फिर इस तरह गूगल स्कॉलर्स पे आते हैं, इस तरह वो आते हैं।
थिंग्स टू कंसीडर बिफोर राइटिंग द आर्टिकल। अब लिखना है तो करना क्या है, कुछ चीजें को हमने टाइम टू राइट द पेपर, पुरसकून जहन हो जब आप लिखने बैठे। हैज ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट बी मेड, उसके लिए लिखने से पहले देखें हैज ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट बीन मेड, इज द हाइपोथेसिस स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिड द एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट योर हाइपोथेसिस, आर द कंट्रोल्स appropriate and sufficient, can you describe the study in 1 or 2 minutes, can the key messages be written in 1 or 2 sentences। तो ये सारी चीजें, ये कहते हो ना कि जब आप सिनॉप्सिस बना रहे हो तो ये सारी चीजों को उस वक्त आपने एड्रेस करना है। और जब आप आर्टिकल, जब आप थीसिस या डिसर्टेशन लिख रहे हो तो उस वक्त आपने इसको एड्रेस करना है। Those who have the most to say usually say it with the fewest word। क्या आप अपनी बात चंद उसके अंदर एक जो 2 मिनट के अंदर कह सकते हैं, आपके जहन में वो सारी चीजें हैं। टेबल कैसी हैं, तस्वीर कैसी हैं, किस कैमरे से बनी है, what about the tables, good figures makes your article more attractive, must be clear and concise, should be self-explanatory, you should have a sufficient time, read the reference। शायद मैं रेफरेंस के शायद एक इसके ऊपर इस लेक्चर्स को ब्रेक करूं, क्योंकि रेफरेंस हमारे लिखना ही नहीं आता, रेफरेंस देखना नहीं आता। तो रीड द रेफरेंस विल हेल्प इन चूजिंग द जर्नल, बेटर इनसाइट इनटू पॉसिबल रिव्यूअर्स। जो रिव्यूअर्स भी आप देखें कि कौन से होते हैं, तो उनके मिजाज के मुताबिक आपने उसको आर्टिकल लिखना है। अब जर्नल को स्टडी करना, स्टडी इंस्ट्रक्शन फॉर द टू आथर, आथरशिप पहले पढ़ लेनी चाहिए। आप देखें कि इस जर्नल के अंदर अगर मैं खोलूं तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन टू द आथर्स लिखी हुई हैं। ये एंड के ऊपर इसके अंदर ये शुरू में पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज, पाक जे मेड साइंसेज, उसके बाद उसका मिशन ऑब्जेक्टिव, इसके बाद आके प्रोसेसिंग, चार्जिंग, प्लेजरिज्म, और सारी इसकी इंस्ट्रक्शन टू द ऑथर, इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑथर, विजिट आवर वेबसाइट .com, pj.com, .pk। ये इस तरह आपके बहुत सारी चीज़ें हर जर्नल्स के लिए लिखी होती हैं। इस जर्नल को मैं इसलिए वो कर रहा हूँ कि इस वक्त इसका पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट फैक्टर खासा बेहतर है, तो इसलिए मैं अपने आज के आर्टिकल की, JPA में भी बहुत पुराना जर्नल है, कॉलेज ऑफ फिशन जर्नल है, बहुत अच्छा जर्नल है। तो ये 3-4 जर्नल्स हैं जिनकी जो है ना, इनका इम्पैक्ट फैक्टर बेहतर है। टेंटेटिव टाइटल एंड समरी आपकी कैसी है, उसके अंदर आप देखें चूज आथर्स। अब आथर्स को आपने देखना है, क्रेडिबिलिटी। अब आथरशिप क्या है, ये आथरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने कितने आथर रखने हैं और आथर की क्रेडिबिलिटी क्या है। मुलाजिम हुसैन बुखारी की क्या क्रेडिबिलिटी है, जब बात करता है, लिखता है, उसके ऊपर कितने लोग यकीन करते हैं। तो आथर, आप किसी के कहने पे, किसी आपने वाइस चांसलर का नाम शामिल कर दिया, उसने काम ही नहीं किया, किसी प्रिंसिपल का नाम शामिल कर दिया, प्रोफेसर का नाम शामिल कर दिया। हाँ, आज आपके लिए प्रॉब्लम भी है कि इफ यू विल नॉट इंक्लूड देयर नेम, हो सकता है आपके प्रमोशन में भी प्रॉब्लम है, लेकिन दिस इज नॉट द एनएसटी, यू डू इट। ईच ऑथर शुड हैव ए participated sufficiently in the work to take public responsibility for the content। ईमानदारी आप देखें, खुदा के लिए आपने देखें, अपनी रिसर्च को देखें कि हर ऑथर क्या पार्टिसिपेट करता है। द पार्टिसिपेशन मस्ट इंक्लूड नंबर 1। अब वो पार्टिसिपेशन भी क्या है, ये नहीं है कि पानी का गिलास उठा के दे दिया, चाय का कप दे दिया, आप जब लिख रहे हैं तो आपकी वाइफ भी उसके अंदर शामिल होगी, ऐसा नहीं है। योर वाइफ कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द ऑथरशिप, योर डॉटर कैन नॉट बी इंक्लूडेड until and unless she has participated actively। अब क्या होता है, पाकिस्तान में खामंद ने लिखा है तो वो बीवी के नाम देकर देता है, बीवी ने लिखा है तो खामंद के नाम कर देता है।
माँ बाप घर बैठते हैं अपने बच्चों के लिए लिखते हैं, चले यार उनको FCPS की रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो क्या है, कंसेप्चुएशन और डिजाइन, स्टडी डिजाइन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा आर द बोथ। इनमें से क्या क्या किसने किया है? ड्राफ्टिंग ही इंपॉर्टेंट है। आप ड्राफ्टिंग द आर्टिकल, रिवाइजिंग इट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट कंटेंट। मैंने कहा था कि मैं शुरू में अपने आर्टिकल्स को पढ़ाता था, तो वो भी ऑथरशिप हो सकती है। लेकिन उसके साथ लिखें कि फलान है कि मेरे साथ क्या है, ऑथर में क्या लिखा। ड्राफ्टिंग द आर्टिकल और रिवाइजिंग इट फॉर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल कंटेंट, see the final approval of the version to be published. Participation only in the collection of the data does not justify the author. ये देख लें कि सिर्फ ये नहीं है कि डाटा कलेक्शन करके आपको दे दे, तो वो आपका PN भी ले आ सकता है, आपका लैब टेक्नीशियन भी ले आ सकता है, आपका ये सारे आपकी जो वापसी को काट रहा है आपको, वो भी इसके अंदर ऐसा नहीं है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल A, B and C above critical to its main conclusion must be attributed to at least one author. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑथरशिप का। ऑथरशिप ऐसा देना, ये आप अपनी औलाद होती है रिसर्च, और अपनी औलाद का मालिक आपने किसी को नहीं करना। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दैट इज पार्टिसिपेशन सोली इज कलेक्शन ऑफ डाटा डज नॉट मीन आपके इंस्टीट्यूशन का सरबराह होना, उसका नाम शामिल कर देना, इट्स नॉट ऑथरशिप। आपके किसी दोस्त का नाम जो अक्सर फाइन, यार मेरा तो यार प्रमोशन हो रही है, मेरा नाम शामिल कर दें, दैट इज ना जुल्म है। आप इसका आप इंतहाई जुल्म करते हैं। राइटिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट। अब एक हिस्सा हमने ख़त्म कर लिया, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको यहाँ ब्रेक करते हैं और कल लिखेंगे, कल देखेंगे हाउ टू राइट द मैन्युस्क्रिप्ट। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द स्टडी है, ठीक है, उसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। तो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ये हम कल इस आर्टिकल शिप को दोबारा लिखेंगे, इसको दोबारा पढ़ेंगे। और आज हमने जो पढ़ा आर्टिकल का कि क्या है मैन्युस्क्रिप्ट, क्यों लिखा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट अच्छा क्यों रिजेक्ट होता है, मैन्युस्क्रिप्ट अच्छा लिखने के लिए क्या, व्हाट आर द बेसिक principle how to write a good article, what are the basic principle to submit in a good journal, what is the objective of writing an article, how to make a good science. These are the things that we have discussed today. Tomorrow lecture we will start how to write, and उसके बाद एक आर्टिकल जर्नल होगा, मैं लेक्चर दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि सबमिट कैसे करना है। थैंक यू सो मच।